Welcome back, dear students. In this chapter, we have completed the topic air pollution. The chapter 9, environmental pollution. So now we will start with water pollution. Little bit idea I have already given in the previous video. So let's start. The waste and harmful chemicals from factories, when dumped into water bodies, they pollute the water, right? And this is called water pollution. जो वेस्ट और केमिकल्स फैक्ट्रीज का डंप करा जाता है वाटर बॉडीज में, फेंका जाता है वाटर बॉडीज में, उसी से वाटर पोल्यूट होता है. इससे खाली पानी पोल्यूट नहीं होता. इट डजंट मेक द वाटर इम्प्योर ओनली, बट इट इफेक्ट्स द एक्वेटिक लाइफ लिविंग ओवर देयर, राइट. तो जो वहाँ पे रहने वाले जीव जंतु हैं, वहाँ प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको बहुत इफेक्ट करता है. ह्यूमन एक्टिविटीज विच पोल्यूट द वाटर आर लिस्टेड below. Draining sewage waste into rivers. We drain sewage waste, गंदा पानी जो हमारे घरों से, वेस्ट गंद जो हमारे घरों से निकलती है, वो सारा दरिया में जाता है. Domestic and agricultural waste from fields flushed into water bodies. Domestic means घरों से, और agricultural waste जो खेतों का वेस्ट होता है वो भी वाटर बॉडीज में जाता है. Dumping chemicals and toxic waste from factories. जो फैक्ट्री वेस्ट होता है वो टॉक्सिक होता है, पॉइजनस होता है, राइट. और उनका सारा लिक्विड वेस्ट पानी में चला जाता है. वॉशिंग क्लोथ्स एंड थ्रोइंग गार्बेज इनटू रिवर्स. कपड़े धोना और कुछ भी कूड़ा करकट डालना पानी में बहुत बुरी आदत है. कपड़े हम साबुन से या वॉशिंग पाउडर डाल के धोते हैं, लेकिन वो दोनों चीज़ें हमारे पानी के लिए अच्छा नहीं होता है. एंड वी थ्रो गार्बेज ऑल्सो इन द वाटर. वी कीप आवर हाउसेज क्लीन, right? We take everything and throw it in the water, but the people living near the rivers, they do all this, which is absolutely wrong. And we also do one practice. It's a practice from long back, it's continuing till now, but earlier people used to do it nicely, thinking about the natural resources, but nowadays we don't think about the resources. We are having the custom of immersing the idols. हम देवी की मूर्तियाँ, गणपति को पानी में इमर्स करते हैं. वी इमर्स इट, राइट. पानी में डालते हैं, पूजा होती है, बहुत कुछ होता है, देन वी इमर्स इट इन द होली वाटर. अर्लियर पीपल ऑल्सो यूज टू डू दिस. ये बहुत प्राचीन परंपरा है हमारी, बट वो मिट्टी से बनाते थे. मिट्टी वाला आइडल पानी में जाता था, वो बह जाता था मिट्टी बन के. इट्स नेचुरल रिसोर्स. इट्स सेटल डाउन एट द बॉटम and it's good. It's not harmful for any aquatic life. But now we are going in the wrong direction. हम भी देवी की मूर्तियाँ, गणपति बापा की मूर्तियाँ पानी में डालते हैं, but of different material. प्लास्टिक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, different paints which are not good for aquatic life. उससे बहुत सारे aquatic animals मर जाते हैं, aquatic plants मुरझा जाते हैं. So we should not do all this, right? We have full faith in God. We have to follow all this. I'm not saying we have to stop. We have to continue this for millions of years. But we have to put full stop of making the things of this plastic and other materials which are not good for the water bodies. We should think of alternatives. We have hundreds of alternatives. We can think of other alternatives in such a natural source which is not problematic for the water bodies. Now, allowing animals, cattle and livestock to bathe and defecate in and around water bodies. अब एनिमल्स को लेके लोग चले जाते हैं या एनिमल्स जाके नहलाते हैं उनको पानी में, वो भी गंदा हो जाता है, उससे भी पानी गंदा हो जाता है. डेफिकेट. डेफिकेट मीन्स उनका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो कहीं भी रिमूव करते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव एनी टॉयलेट्स और ऑल दैट, एंड दे डोंट हैव दोज सेंसेस. उनको ग्रूम किसी ने नहीं करा कि आप बेटा ये गाय माता ये टॉयलेट है, आप टॉयलेट में जाओ. नो, दे डोंट नो, दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट. आप बैठ सकते हैं घर में तो आप उनको सिखाते हैं तो ग्रूम देम प्रॉपरली. पपी होता है घर में, डॉग होता है, तो उनको पता है दे हैव टू गो आउट, राइट. आप लोग उनको बाहर लेके जाएंगे. आजकल के डॉग के टॉयलेट, जिनके घर में डॉग्स हैं वो अपने डॉग के टॉयलेट्स भी बनाते हैं, एंड डिफरेंट वन, सो द डॉग को पता है दैट आई हैव टू गो एंड डेफिकेट ओवर देयर. अगर एनिमल्स सॉइल पे डेफिकेट करते हैं, इट्स गुड बिकॉज इट विल टर्न टू मैन्योर.
बट अगर पानी में करते हैं तो पानी इम्प्योर हो जाता है, राइट। नाउ कंजप्शन ऑफ अनक्लीन वाटर कैन कॉज सेवरल डिजीजेस लाइक कॉलरा, जॉन्डिस, टाइफाइड एंड डायरिया। अगर हम गंदा पानी पीते हैं तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं। दीज आर ऑल वाटर बॉर्न डिजीजेस। इट इज कॉलरा, जॉन्डिस, टाइफाइड एंड डायरिया। कभी कभी हम बाहर से गोलगप्पे खा के आते हैं और घर जाके वोमिटिंग हो जाता है। ड्यूरिंग समर्स एक्चुअली इट हैपन्स। हम बाहर गन्ने का जूस पी के आते हैं और घर जाके वोमिटिंग, स्टमक अपसेट एंड लूज मोशन स्टार्टेड। व्हाई? बिकॉज दैट वाज नॉट हाइजीनिक। अगर हम एक हाइजीनिक प्लेस से खाएंगे, अच्छे से आउटलेट से लेंगे, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट यू नेवर नो ऑन द रोड साइड जो गोलगप्पे बेचते हैं वो कौन सा पानी यूज़ करते हैं। सिंपल टैप वाटर जो सड़कों पे नलके होते हैं, बहुत बार आई हैव सीन वो वही पानी निकाल के बाल्टी में, देन दे पुट देम इन दैट वाटर इन द मड ग्लास एंड दे सर्व अस, राइट। और हम लोग भी नहीं देखते, हम भी और भैया और पानी दीजिए, इजंट इट। वी ऑल्सो हम भैया एक और गोलगप्पा खा के फिर पानी भी एक दो वो पी लेते हैं हम 2 times. Why? We love the taste. Okay, that I know, right? Taste is up to our tongue only, but what happens inside when that water, right, dirty water enters our body, it enters our digestive system, एकदम से हमें infection हो जाता है, right? Germs enter along with that, and sometimes we suffer with fever, vomiting, loose motions, nausea, right? These are simple symptoms, and ultimately it's cholera, jaundice, typhoid and diarrhea. Sometimes all these also happen, so we have to take care whenever we have to munch on all these things, right, students? Now prevention is better than cure. That is the main thing. We can prevent ourselves from all the diseases. Right now we are taking all measures to prevent ourselves from COVID-19, from corona disease, isn't it? We are following all the measures. We are staying indoors, right? We are washing our hands many times. We are wearing our mask whenever we have to go out, and when we come back we wash our mask, or if it's disposable we throw it out, right? We don't let anyone that they will enter our house with the sleepers. No, these precautions we are taking. Earlier people were taking these precautions in their normal life. Earlier, when my grandmother was there, they used to say they don't let us to enter with the sleepers, right? But now there's a trend, we are entering in every house with the sleep, every room with the sleeper. But no, we should put an end to it. Likewise, whatever we are doing right now, what I personally think that we should continue with all this. We should wash our hands many times. That's good. I think the olden times, that was the golden time. There were not much problems and diseases. Nowadays small kids are having number of problems, sometimes vomiting, sometimes headaches. No, that time it was not there, because we are not listening to our elders, we are not following the rules, right? Now next, let me show you, this is a picture in your book, factory waste drainage, right? This is your factory waste drainage. Just have a look how filthy it is. Sewer drainage, नालियों का गंदा पानी, सबसे गंदा. Now next, it's land pollution. Land or soil pollution is due to the dumping of waste on land. हम धरती पे सारा कूड़ा करकर डंप करते हैं, that is land pollution. In other words, we can say land pollution is the degradation of the earth's land surface through the misuse of soil. हम degrade करते हैं, हम खराब करते हैं, हम pollute करते हैं हमारी धरती को, right? misuse करके. प्लास्टिक वेस्ट डज नॉट डिकम्पोज. प्लास्टिक का सामान को अप्रोक्सीमेटली 500 years लगते हैं डिकम्पोज होने में, गलने में, मिक्स होने में. प्लास्टिक रिमेन्स इन द सॉइल फॉर 500 years. सो थिंक, वी आर पोल्यूटिंग द सॉइल. बहुत सारे लोग डंप करते हैं, डंप यार्ड में सारा कूड़ा डालते हैं, ऊपर से मिट्टी डालते हैं. व्हाट विल हैपन टू दैट सॉइल? पॉलीथीन तो वहीं रहा, हम तो सारा कूड़ा अपना पॉलीथीन्स में डाल देते हैं, राइट? अब कुछ पॉलीथीन डिफरेंट टाइप के बनते हैं जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं. यू हैव रेड अबाउट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, इजंट इट? इन योर प्रीवियस क्लास आई थिंक यू हैव रेड अबाउट, या biodegradable and non biodegradable. Biodegradable mixes with the soil, so we have to think of such things which can mix in the soil, then put it anywhere, it will become manure, right?
whatever we are doing, whatever we are using, it should be good for all living organisms, even for the natural resources also. The major causes of land pollution are solid waste from homes and factories, liquid waste from hospitals and industries. लिक्विड वेस्ट जो हॉस्पिटल्स का है, इंडस्ट्रीज का है, बाहर फेंक देते हैं. घरों का हम सॉलिड वेस्ट बाहर फेंक देते हैं, तो वो सारा हमारी धरती में ही समा जाता है. दिस इज अ फैक्ट ओवर हियर. बैट्स कैन डिटेक्ट एंड प्रोड्यूस हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेस्ट कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स. बैट जो चमगादड़ होते हैं उनमें ये कैपेबिलिटी है, वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव जिनको हम अल्ट्रासोनिक वेव्स भी कहते हैं, वो उनको डिटेक्ट कर सकते हैं. And one thing more, and sound beyond 90 decibels intensity is harmful for the ears. Now, causes of noise pollution. What are the causes? Let's understand this. Loud horns of vehicles, bursting of crackers, using loudspeakers during festivals, weddings are the major causes of noise pollution. लाउड हॉर्न्स, सड़कों पे हॉर्न बजते रहते हैं, राइट. पटाखे, जस्ट थिंक अबाउट दिवाली, राइट. एंड यूजिंग लाउड स्पीकर ड्यूरिंग फेस्टिवल, ड्यूरिंग वेडिंग्स. इट्स अ वेडिंग, ओके, इट्स अ फेस्टिवल, a day of joy, a day of celebration. So celebrate. Why to make a lot of noise? Why these DJs? Okay, DJs, just keep the sound in a proper way, proper volume. It's not necessary that we have to disturb everyone living around. No, it's celebration for us. It's joy for us. Why to disturb others? Why to create noise pollution? Isn't it? Now, saving the earth. This was about your pollution. Now, saving the earth. We are exploiting the natural resources and degrading the environment for our own selfish needs. It's time to pay attention to this issue. Create awareness and work upon conserving nature. Some of the ways to save the environment are, what we are doing right now, we are exploiting our environment, our natural resources. We are degrading them. हम उनको धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं for our own selfish needs, because we need them. We are greedy enough, right? We are selfish. हम लोग बहुत सेल्फिश हैं, हम अपने लिए इन चीज़ों को ख़त्म करते जा रहे हैं. एंड नाउ इट्स टाइम टू पे अटेंशन टू दिस इशू. अब हमें चाहिए कि हम इस पे ध्यान दें कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए. वी कैन क्रिएट अवेयरनेस एंड वर्क अपॉन कंजर्विंग नेचर. अब जो हमने अभी डिस्कस करा, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एयर, वाटर, लैंड एंड साउंड पोल्यूशन. यू कैन डिस्कस इट इन योर, यू कैन जस्ट एक्सेप्ट इट ऑल दिस with heart. Yes, I will not do all this. I don't want to harm any living organism. I don't want to harm any natural resource. Right? If we will take a pledge, nothing will happen to our natural resources. Nothing will happen to the aquatic life. Everything will be okay. But we need to think about it. We can create awareness and work upon conserving nature. If someone is doing wrong, you can tell them, no, don't do this. This is wrong. You can explain this is not good because we are creating harm to other things. Right? Some of the ways to save the environment are, now we should work for conserving nature. We have read about soil conservation. Right? This is nature conservation. How to conserve our nature. How to protect our nature. Number one, reduce, recycle and reuse the resources. 3 R's of the environment. In short, we call all this as 3 R's of the environment. 3 R's means reduce, recycle and reuse. Reduce करो चीज़ों को यूज़ करना. रिसाइकल करो. प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, ये सारा रिसाइकल होके आता है. तभी तो कबाड़ी हमसे ये चीज़ें लेके जाते हैं. वो फैक्ट्रीज में दे देते हैं, फैक्ट्रीज में इनका नई चीज़ बन के आती है. दैट्स गुड. रिसाइकल इट एंड रीयूज. राइट? चीज़ें हैं उनको यूज़ करो. ये नहीं नया लाया फेंका फिर आपको नई चीज़ पे नज़र पड़ी आपने वो लाया. नो. आपके पास लास्ट ईयर की कॉपीज होंगी, इस ईयर उनको अगर उनमें कुछ पेज बचे उनको मैथ्स का काम करो.
not fair work. Practice. Learn questions, write answers in that, use those things. Right students? Plant a tree for every tree being cut. अगर हम एक ट्री काटते हैं उससे पहले ही हमें एक ट्री प्लांट करना चाहिए ताकि उस ट्री के बदले हमें दूसरा ट्री मिले. राइट? सेव फ्यूल सिंस बर्निंग ऑफ फ्यूल्स कॉज एयर पोल्यूशन. ज़्यादा ये पेट्रोल डीजल इनको नहीं ज़्यादा जलाओ. राइट? इनको ज़्यादा यूज़ नहीं करो. लेकिन वो कैसे करेंगे? हमको तो जाना है. People have to go to offices, people have to work, so they have to go in cars. They have and they will use it. Then what to do? We can club together. हम एक साथ जा सकते हैं. 4 लोग एक साथ ऑफिस जा सकते हैं. राइट? अगर एक ही ऑफिस में है, एक ही सोसाइटी में रह रहे हैं, तो they can club, they can go. That way we can use metros. We can use buses. Yeah, it is inconvenient for us. But little bit we can do. Not daily, but once in a month we can do this. Or once in a week we should pledge. Yeah, once in a week I will use metro. I will park my car over there and I will use metro. Today I will save fuel. Because metro is running, isn't it? Thousands of people are commuting. So we can also save fuel. Reduce the use of unnecessary material. जो चीज़ें हमको नहीं चाहिए उन चीज़ों को यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है. कभी कभी हम लोग टेम्प्ट होते हैं, ओह दिस इज़ वेरी नाइस, लेट्स परचेज. फिर हम घरों में अलमारियों में रख देते हैं. वाई टू कीप? व्हेनेवर वी विल नीड इट उस टाइम परचेज करेंगे. पहले ही करके क्या रखना जब हमको वो चीज़ ज़रूरत ही नहीं है. अननेसेसरली कोई चीज़ नहीं लानी. हाँ, जो चीज़ हमें ज़रूरत है वी हैव टू परचेज दैट. पॉलीथीन बैग्स कॉज लैंड पोल्यूशन. यूज अ क्लॉथ और पेपर बैग फॉर शॉपिंग. यूजुअली हम लोग पॉलीथीन बैग्स लेके शॉपिंग के लिए जाते हैं, फैंसी पॉलीथीन बैग्स. बट वी कैन टेक फैंसी कॉटन बैग्स, वी कैन टेक जूट बैग्स, इजंट इट? बिकॉज पॉलीथीन कॉजेज लैंड पोल्यूशन. बहुत बार काउज ने पॉलीथीन समेत ही सब्जियां खाई हैं और उनके यहाँ चोक हो गए एंड दे डाइड. दे चोक्ड टू डेथ. डू वी वांट दैट आवर एनिमल्स शुड डाई ड्यू टू सफोकेशन? बिकॉज दिस प्लांट, दिस पॉलीथीन, they can't absorb, they can't digest this polythene. So are we killers? We want to kill animals because we want to throw the garbage outside. So we should always keep this in mind. Whenever we are throwing garbage for these animals, we should throw it somewhere on the sand or soil or whatever place, but polythene should not be there. Right? Sometimes little bit polythene also enters and that can lead to death also. Never play loud music. Do not honk the car horn unnecessarily. जोर जोर से म्यूजिक चलाना कोई ज़रूरत नहीं है. We are happy, so enjoy. We should have enjoy, right? It's not necessary that the other family is also happy. Maybe they have something wrong went over there. Maybe they are sad and they are not happy. Maybe in the early morning they have to go to offices, right? They don't want to listen late night music and all that. So we should think about that. And we should not honk the car horn. कभी कभी रास्ते में traffic jam, honking the car horns unnecessarily. Yeah, traffic jam is there. Everyone is aware. Why to honk it? So we should stop. That causes noise pollution. And conduct regular checks to ensure that factories obey the pollution laws. और हमको हर टाइम ये चेक करना चाहिए कि हर कोई फैक्ट्री पोल्यूशन लॉज को ओबे करती है. देयर इज अ रूल फॉर एवरी फैक्ट्री. दे हैव टू ओबे द पोल्यूशन रूल्स. राइट? वी हैव टू कीप एंड चेक ऑन इट. इफ वी विल फॉलो ऑल दीज स्टेप्स, अर्थ विल अगेन टर्न इनटू अ हेवन, रियल हेवन. Right? So this was all in this chapter, students. I think it's done. I think something I have left. Let me check. Okay, this point I have left this point here. Loud and unpleasant sound is called noise. Loud and unpleasant sound. जोर की आवाज़ और जो हमको अच्छी ना लगे. You can understand it, students. जो आप शोर मचाते हैं जब when teacher is not around in the class. That is called noise. That's why we always say you are making lot of noise in the class. Sorry, I missed it earlier. Noise pollution is harmful for all living organisms as it has the potential to damage the hearing organs.
apart from causing stress and irritation. नॉइज़ पोल्यूशन सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि इससे हमारे हेयरिंग ऑर्गन्स डैमेज होते हैं और हमें इरिटेशन आ जाती है, वी फील इरिटेटेड, स्ट्रेस बढ़ जाता है. द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल्स. द मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ ऑडिबल साउंड फॉर ह्यूमंस इज 20 डेसिबल्स. इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो होती है वो डेसिबल्स में मेजर होती है, और हमारा जो मिनिमम इंटेंसिटी है दैट इज 20 decibels. Okay. Sorry, I forgot that time. Sorry for that, students. Now we have, it's over now. We have completed the chapter. Now, if you have any doubt regarding anything, right, you can message me. I will explain if any doubt is there. This is all for today's chapter. I think we have explained each and every point. And this is in your book also, right, students? Thank you, students. Listen this video at least twice, both the videos at least twice, only then you can understand the videos properly. So have a nice day, dear students. Bye bye.